दूसरे लगे अक्षर दूसरे लगे ओ बोल केमती करता है Okay students, welcome to today's class. This is a new lesson, the portrait of a lady. Here the portrait means photo, art करथिबा photo. बेले बेले फोटो गुडी को आमे चित्र हाथ रे एक्टिंग करथाउ छ कि नहीं सेटा फोटो के बोल तुम मन रखो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी माने उटे लेडी रो फोटो राइटर किए खुशवंत सिंह टेक्स्ट देखिबा यूनिट 1 एटा in this lesson Kushwant Singh tells us about his childhood experience along with the social relations, how social relation changes with the change in the time. समयर परिवर्तन सहित social relation किमती चेंज होची ता विषय रे एक्सप्लेन कराउछ राइट तो से तार ग्रैंडमदर सहित तार रिलेशन बिगिनिंग रे केमती थिला परवर्ती समय रे केमती थिला ये विषय रे से एक्सप्रेस करछ के खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर बोले कोन जजमा राइट हेले इन द फर्स्ट यूनिट ही टेल्स अस अबाउट grandfather and grandmother, how they look like from a portrait, a photo. Now look at the sentences, what he tells about the grandfather and grandmother, right? My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old, wrinkled for 20 years that I had known her. I माने खुशवंत सिंह से कहूँ मु तांको जानिबा जति समय अछि 20 years हैला देखुची she is old alike आगर जिमति थिला सेम सिमतिका 20 वर्ष पर्यंत she is looking old same unchanged. I had known her. People said that once she had been young and pretty, beautiful. Gute दिन थिला she was young and pretty, and even had a husband. तार गोटे husband मध्य थिला. But that was hard to believe. Very difficult to believe. Hard to believe means ये जो कहूची तार एज को मते देखिले सेतल ताको गोटे हस्बैंड थिला it is hard to believe, difficult to believe. My grandfather's portrait hang माने झुली की थिबाटा. This is hang over the mantelpiece of drawing room. एतिब जाई से कोन कहला ग्रैंडमदर विषय कहला एबे कहूची ग्रैंडफादर रो फोटो तांकरो देखो मेंटल पीस बोले जो घर गुडी करे ड्राइंग रूम रे निया लगे थिबे तापर ऊपर गोटे फ्रेम बलिया थिबो सेल्फ हे कि थिबो सेल्फ ऊपर फोटो को टंगा जायछि कार फोटो सेटा ग्रैंडफादर रो फोटो पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर ओके इज हैंग तो ता विषय रे एबे मेंटल पीस मीन्स इज ए सेल्फ बोले चलो नहीं हमरो देखो सेटा कपबोर्ड अछि बोले ताइर सेल्फ जोटा अछि से ऊपर टंगा हिच
So we came to know that he knows his grandmother for last 20 years. 20 years she is old, but she is looking unchanged. Okay? Tapare people said that young time she was very pretty and beautiful or beautiful. And it is hard to believe what? That once she had married and she had a husband. तापर आसला ग्रैंडफादर रो फोटो विषय पोर्ट्रेट विषय से पोर्ट्रेट कम तो देखो he or where the past tense or माने is equal to put on फेजल वर्ब पिंदी थिला where means put on होची put on रो फेजल वर्ब where बोल के मन रखो अरे दूसरे ले ले बिग टार्बन मुंडे गोटे पागुड़ी भलिया बांधिला टार्बन बोले तार फोटो रे केमती अछि से लूज फिटिंग क्लॉथ आ से क्लॉथ जोटा पिनथिला दैट वाज लूज फिटिंग his long white braid दाढ़ी okay covered the best part of his chest छाती पर्यंत तार दाढ़ी लंबी कुठी से पोर्ट्रेट रे इन द फोटो how he looks like that has been described here chest पर्यंत तार दाढ़ी लंबी he looked at least 100 years old तार फोटो देखिले जणा पड़ुची it is clear from his photo that he is about 100 years 100 years ରୁ कम होबनी बल्कि कहउची कुशवंत सिंह का विषय कहउची थी ग्रैंडफादर विषय कहउची grandfather remember this how old he would be 100 years old at least he did not look देखिबा को से जणा पड़नी the sort of person sort type से प्रकार लोक who would have a wife children एमती जना पड़नी से फोटो देखिले जे he had a wife and children he looked as if देखो as if बोले जेपरि की he looked as if गुटे make sentence में आइबो put on गुटे जेमती as if गुटे मन रखो जेपरि की he could only have lots and lots of children एमती लागुची तार निश्चित भाव में बहुत गुटे चिल्ड्रेन थिबे चिटी कोइला he did not look the sort of person who would have a wife and children कोइला और कोची he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren एते बुढ़ा दोस्त जैसे ताको चिल्ड्रेन कोनो ग्रैंड चिल्ड्रेन माने थिबे ग्रैंड चिल्ड्रेन माने थिबे बोली से कोची as for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting बोले बेले बेले आमे गोटे द्वंद्व रे पड़िबा से समय रे आमे जो जिनसटा भाबुतबा सेटा सत्य न होई पारे बोलिबा गोटे द्वंद्व आम भीतर सृष्टि हबो दैट इज थॉट रिवोल्टिंग मींस अनएग्रीमेंट आमे जोटा भाबिथिबा ताको राजी हो नतबा ताको थॉट रिवोल्टिंग बोलिबे से भावनाटा मो भीतर एग्री होनी बोलिबा थॉट रिवोल्टिंग जे सतरे का ये यंग थिला बेले ये बुढ़ाटा को मैरिज हेतिला कि इट इज हार्ड टू बिलीव या विश्वास करि होनी तेनु करे दिस इज रिवोल्टिंग बोली कहउची she often told us of the games she के ग्रैंडमदर कथा कहउचे तार चाइल्डहुड समय रे she often बोले कोन always told us of the games मन रखो MCQ आस पारे she used to play as a child से पिला वाले की गेम खेलतला से विषय रे she was explaining us telling us grandmother कौन खेलतला she used to play as a child को विषय कहउची गेम्स that seemed quite absurd unbelievable and undignified unrespectable on her part we treated it like a fable of prophet she used to tell us fable kahani
जमी पौराणिक कहानी गुड़ी को फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स बोली कहबे बोले बेले बेले आम छोट पिला बेले अजा आई मैंने जेजेबापा जेजेमा मैंने गोटे गोटे कहानी कहते राक्षस मनकर कि पुराणा फेबल बोले इट मे नॉट बी ट्रू मन गड़ा कहानी तैयारी करी कहते सी जहाँ कहला आमको एमती लगुला जे से गेम्स खेलुला ये सब जाक आमको केमती लगुला एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन आवर पार्ट वाली फील होता आ लगुला से सत ही नथिबो ए गोटे कहानी से आमको जनाऊँ किए ग्रैंड मदर मे नॉट बी ट्रू नेक्स्ट देखो she had always been short fat and slightly bent देखिबा को केमती से how she look like short and fat and little bent age हे जाइची old age तनको टिके bend हे जाइची body her face was a criss-cross wrinkling running from everywhere to everywhere wrinkling वाले face रे तारो ओल्ड एज हेले जो चमड़ा जाक फोल्ड होकर गिरा गिरा हो जाइटा क्रॉस क्रीस ना कौन था क्रीस क्रॉस रिंकल्स रिंकल्स मान से मोड़ी जाइथिबा चिन्ह गुड़िक सारा फेस रे रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर बोले एंटायर फेस रे तार मोड़ी जाइछि आ से फोल्ड गुडाक पड़ जाइछि दैट मींस शी इज डॉटरिंग ओल्ड वेरी ओल्ड बोल के जना पड़छि explanation. No, we were certain, sure. She had always been, she had known her as we have known her. किंतु से कौच कौन? I'm sure. We were not sure. No, we were sure. Certain बोले sure. She had always been as we had known her. आमे जिमिति जानचु से सिबितिका थिला एका भली रहिछि सेम रिंकलिंग फेस आगर ही बोली कहउछि से किमती ना ओल्ड किमती ओल्ड टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन एल्डर आउ ओल्डर हे पारिबने एते ओल्ड अछि से ओल्ड हे जाइछि बोले एते ओल्ड हेछि जे आउ तापर ओल्ड बोलिबा जिंस नाही सो मच ओल्ड सेटा पय मो से गुटे पद यूज करली doddering old बोले the last stage of old and had stayed at the same age for 20 years how long she stayed at for 20 years 20 years बोला से गुटे heavy old age जिमते थिबा कथा से heavy old age का देखा जाउछ unchanged she could never have been pretty बोले कोन कहथिली beautiful but she was always beautiful she was always beautiful she hovered बोले moved about the house so already old age जाइछि केबे के गुड समय रे प्रिटी थिला केबा ब्यूटीफुल थिला एबे किंतु से ओल्ड हेला पर से कोन करछि घर चारि कानी बुलुछि spotless white with one hand resting on the waist to balance her stoop body and other tailing the bed of rosary तो होवर्ड माने घर चारिकानी याडे सियाडे हेगिर बुलीबाटा मूविंग अराउंड द हॉल एमलेस मूवमेंट आ से ओल्ड एज हे जिवा फल तार बॉडी टिके बेंट हे जाइछि लही जिवा फल से कोन कहूछि तार वेस्ट डबल ए आई एस टी वेस्ट मान अंटा अंटा ऊपर गुटे हाथ देकरी बॉडी के सपोर्ट करछि से स्ट्रेट हवा पाई ओके और स्टूप मींस द बॉडी को सपोर्ट करिवा पाई बोल की बैलेंस करिवा पाई बोल की रेस्टिंग डेज one hand resting puthi on her waist and she is looking white very white आ गोटे पटे कोन करछि से गोटे हाथ तो देछि अंटा ऊपर आ गोटे हाथ रे से कोन करछि बेड ऑफ रोजरी करछि ले हमर जो जपा माळ थिबो नै के सिंध माळ धरछि एंड प्रेइंग निश्चित भाव से बेड ऑफ रोजरी धरतो बोले भगवान को ना के कोन गोटे कोई कोई बुलछि घर जाक her silver locks were scattered
untidily over her pale puckered face. Silver lock बोले तार हेयर को आउची हेयर टिके ओल्ड एज हे गेला पर व्हाइट हे कि ग्रे हे जाईची तो एटा सिल्वर कलर जाईची लॉक्ड बोले से गोटे प्रकार रिंग रिंग हे करी झुलिबाटा हेले स्कैटर्ड बोले कोन स्प्रेड चारिकानी बिछाडी हे जाईची अनटाइडली बोले झांपरी मुंडे हे जाईची बुझ परलो अनटाइडली बोले से बाला को ठीक से सजेइनी तेन करी एटा स्कैटर हे कि चारिकानी अछि ओवर हर पेल पकर्ड फेस तार फेस टिके पॉक मार्क अछि बसंत चिन्ह वाला चिन्ह ताई ऊपर घुडे ही जाईची ओके किंतु तार लिप्स ओठ रे सब बोले कोन गोटे चल थाउची मंत्र काहे कि बेड ऑफ रोजरी धरची से बोले जपमाला धरची बोले कोन गोटे जप करथबो हर लिप्स कांस्टेंटली मूव्ड इन अन ऑडिएबल प्रेयर प्रे करथाउची से okay always she is praying but inaudible bahare ka ko subha jaun natho silence re it looks that she is moving her lips means she is talking or she is praying प्रार्थना करता होची भगवान को तार लिप्स तेन करी मूवमेंट होची तो एटी तार फिजिकल अपीयरेंस विषय रे रहला हेयर विषय रे रहला फेस विषय रे रहला लिप्स विषय रे रहला के कोन फंक्शन करची तार बॉडी रो yes she was beautiful gute dino she was like the winter landscape in the mountain iti tolana kara heichi winter landscape bhaliya white etik beautiful winter landscape bole kono jodi gote mountain upare बरफ आच्छादित हेतिबो बरफटा white color ki nai snow ice ice spread on the mountain how white it will look she is looking that much white ताको से winter landscape बोली को आउची okay an expensive pure white and breathing peace and contentment बोले satisfaction तार जीवन रे से full of peace रे रहउची आ full of satisfaction तृप्त बोई दो चुकरे serenity means peace calmness glossary देछि देखो silence so she is breathing days and days peace and contentment satisfaction so overall we have studied how the grandfather was first round रे हमें देखिले जे ग्रैंडफादर तांकर फोटो कोठी लागितिला देखिबा को केमति थिला टर्बन थिला ना नहीं टर्बन बोले कोन पागुडी मुंडरे पागुडी बांधिला तार ब्रेड कोठी जाइतिला अप टू चेस्ट दाढ़ी लंबी थिला he is looking not less than 10 years केते वर्ष 100 years it is hard to believe that he had once married and he had children but he had lots and lots of children grandchildren बोली से कोई देखो तापर ग्रैंडमदर विषय कोई उभय को विषय जान लो मु तापर तुमको एमसीक्यू पे भी
देख रहे यार दूसरा में ए पार्ट portrait of the lady. दूसरा तो मन को how does the narrator describe his grandmother's age? Guess करो. Old and wrinkled. हाँ ठीक अच्छी. Second question, what did people say about grandmother's past? तार past विषय रे कौन कहते? She had always been old. Na, she had once been young and pretty. Yes. Past रे. She was once being old and young and pretty. 3 नंबर जाग पता विषय पर वो. लीना 3 नंबर आंसर कौन हो बोल चुक. How did the narrator feel about the idea of his grandmother being young and pretty? Excited, na indifferent, na revolted, na delighted. Tanmaya. How did the narrator feel about the idea of his grandmother being young and pretty? Revolted. रिवोल्टेड माने से एग्री हो नतला ता भीतर जो द्वंद्व होतला डिसएग्री से विश्वास करि पार नतला. Yes, revolted. चार नंबर मणिमाला. What did the narrator's grandfather look like in his portrait? Photo. Photo of grandfather elagondio. Number 1, young and handsome. No. Old and dignified. Yes. Middle aged. No. Cheerful and lovely. No. Bolla kota. B. Old and dignified. पांच नंबर श्रेया. What was the narrator's reaction to the stories his grandmother told about her childhood games? तार childhood games विषय से तांग मन कहतला सेटा केंति लागुतला सत लागुतला ना पुराण एल ताको से पद जा कोन यूज कराइतला fable of the prophet ये सब पद यूज कराइतला अछि किति 3 नंबर हो. एब्सर्ड डिसगस्टिंग. एब्सर्ड माने कोन डिसगस्टिंग विरक्तिया लागुतला. छह 7 8 9 करके देखो. नंबर 6 7 8 9. अरे साउ दूसरी 6 7 8 9. तो डायरेक्ट आंसर लिखो ठीक लगे.
How long had the narrator known the grandmother to be old and wrinkled? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଣିଛି ସେ old and wrinkled? ଦଶଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର କରିସାରିଲ କି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନା? छः सात आठ नौ 5टा क्वेश्चन ना? 6 7 8 9 10। Stop. Now check your answers. Answer केते मार्क आछे? 6 7 8 9 10 हेगला कि करो आउ 2 मिनट 1 मिनट देउछ। नंबर पके कि ए बी सी डी रु जोटा हबो सेटा लिखि तो। देखा जाउछ ना श्रेया क्वेश्चन तो बयान लोग एजुकेशन रो। और क्वेश्चन लिख चुकी और आंसर कौन भावुच रे? राइट। Now check the answers. Write it like mark पकाओ। 6 नंबर 20 years 20 years मचना है। एक मार्क। How did the narrator describe his grandmother's face? Number B. এটা 20 years পরে face cross wrinkles थिला बोलकी। ओके के सिलेक्ट करतो राइट मारो ना भूल सिलेक्ट करतो बोले भूल मारो टोटल मार्क्स काउंट करिवो। 8 नंबर What was the narrator's opinion about grandmother's appearance? Right. She was always beautiful. This is the answer. If you are taking it, you are getting 1 mark. The color of the cloth grandmother wore white. What
What did the grandmother use to balance or stoop while walking? गोटे हाथ अंटा ऊपर रखिरी बॉडी को बैलेंस करथला बोली कहैतिला तो आंसर हो कोटा वन हैंड on her waist. What was she doing with another hand? What was she hold on another hand? आ गोटे हाथ से कोन धरतिला बेड्स ऑफ रोजरी खंड जाक मन रखा আছে पद जाक moving to the page 2 now. এটা কইবার চেষ্টা করো dictionary. Oh yes. What did grandmother's hand other hand do while she walked? ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ତମକୁ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜରୀ ବୋଲିବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ଝାପସା ଦୋଷିରେ she told the bed of rosary. गोटे हाथ रे से कौन करथिला तार अंटा ऊपर हाथ देकी बैलेंस करथिला स्टूप को बॉडी को and what was she doing in the other hand वेले told the beds of rosary फुलो जे कौन सिरा जपमाला धर के प्रेयर करथिला. Next question, 12 number. How did the narrator describe his grandmother's hair? तार हेयर विषय केनते हेतिला मु कहितिला नै त जामप्रा मते हेतिला बोली से पद मन रखो चारियाडे बिछाडी हेतिला बेले scattered यार साइड spread so scattered untidily. Silver locks बोले silver color तार हेतिला white and grey color hair which was not in proper order तार अर्थ. Next, what constantly moved in the grandmother's face? Grandmother ro face रे कोटा constantly move होतला lips कहीं से prayer करथला loud रे करथला ना inaudible voice रे inaudible voice रे हेले तार लिप्स कोन करथला मूव होतला 24 hours तेन करी constantly moved बोली कहथला. दरिद्री 14 नंबर. What did grandmother lips do? मु जोटा से तळे कहली से तळे सीधा का आंसर हो बेटा moved in inaudible prayer प्रार्थना करथुला खाली तार वॉइस मूव होतला लिप्स मूव होतला किंतु साउंड सुन नतला का ऑडिएबल माने समस्त सुबाटा इन लगेलो तो तार ऑपोजिट हे गेला. नंबर 15 अतुल guess the answer. To what does the narrator compare his grandmother's beauty? एक बोल जाते रखो तार ब्यूटी कास्ट तो कंपेयर कराई छी समर गार्डन की ना विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन ना ए ब्लूमिंग रोज ना ए शाइनिंग स्टार. बी के को जाते रखो बी
समस्त भी कहल ये जन कहूनी राइट बरफ आच्छादित माउंटेन जमी दुषिब व्हाइट होकर स्नो कवर्ड से टाइप दुषि बोली कहला नंबर 16 Linako, what qualities does the narrator attribute to her grandmother's beauty? Guess the answer. Right. Peace and contentment. ठीक अच्छे वो Number 17 Arpita. How did the narrator feel about grandmother's stories of prophets? से स्टोरी कहला बेलू ये केमती फील करथुला He found them interesting ki no He treated them like a fable yes treated them like a fable मनगड़ा कहानी वाला से पौराणिक स्टोरी कथा कहला वाला लागुतला से ताकू absurd बोले कोन डिसगस्ट होतला not happy with that because the stories were not interesting. Move to the next question. What did grandmother's appearance suggest about her age? Guess the answer. She looked young. It hogi? No. She looked the same age for 20 years. Yes. 20 years पर्यंत तार age same दुस्तला से wrinkled face and all these things. How does the narrator perceive? मैंने understand. His grandmother's hand. How did the narrator perceive his grandmother's hand? देखो always busy कोड अब A B C D. Yes. Options. इटा हो. Telling the bed of rosary. और rosary सी हम हाँ तुमको पाठ भीतर दुईटा बाछी हेजल वर्ब पुट ऑन द गुड सेंटेंस करो एज इफ रे गुड सेंटेंस करो फास्ट लिखली पुट ऑन माने कौन वेयर एज इफ माने कौन ठीक आउ जन को भलिया कॉपी थिवाटा same as others, same as somebody else. For example, he is walking as if his father. बोले ठीक तार बापा बोलिया का से चलुची बोलिबाटा एटा गोटे कंपैरिजन रे यूज हो as if make two sentence each. Yes, Mr. Paresh Shao. इंडिकल उल्टा दूस एज इफ रे गोटे सेंटेंस करो पुट ऑन द गोटे सेंटेंस करो पुट ऑन बोले पिंदिबा हाँ आयर गोटे तायर गोटे